no Kargu tope, Donyi no Kargu tope, polo no Kargu tope, nimi pagomuno, hati haro donya, nimi lupa pagomuno, abu sulu donya. Donyi no Kargu tope, polo no Kargu tope, Donyi no Kargu tope, polo no Kargu tope, gati yasomi, dodungi godopa, diberoyomi. Udah kagak dopa, Donyi no Kargu tope, polo no Kargu tope, Donyi no Kargu tope, polo no Kargu tope, mesin mami, joru mulu dopa. Acho ayoni, abu sulu dopa, Donyi no Kargu tope, polo no Kargu tope, Donyi no Kargu tope, polo no Kargu tope, reti kenyomi. Aru mulu dopa, dene tupe mi, aku bulu dopa, Donyi no Kargu tope, polo no Kargu tope, Donyi no Kargu tope, polo no Kargu tope. Payuni ruyu adi dopa, edi yakumi, ruyu adi dopa, Donyi no Kargu tope, polo no Kargu tope, Donyi no Kargu tope, polo no Kargu tope. Benci temen जैसे ही chanting हो रहा होगा तब उनको यहाँ पे आने के लिए बोलेगा।
Asike roman kipade nege rosaroke dhaneti diyate kap badke kakomo dheneko dheneke hatanga roke kalate devobe dheneko dhaneke hatanga roke kalate devobe dheneke dheneko tamike dheneko dheneko chikuke hat tajuke dheneka kalate devobe dheneko chikuke hat tajuke dheneka kalate devobe dheneko pike dheneko हमारे जो इफ्साप में अभी तक हम लोग देखा गया है कि इफ्साप में बहुत एक जरूरी है जो एक कॉमन सॉन्ग, चाहे वो ब्लैक सॉन्ग बोलिए, एलिफेंट बोलिए, ब्लैक सॉन्ग, जो हमारे यहाँ पे इतने कम्युनिटीज है, सबसे ज़्यादा कम्युनिटीज बहुत जानकारी लोग हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस की डॉक्टर साहब से काफ़ी वाकिफ है। उन्होंने हमारे इफ्साप के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सारा जी पधार चुके हैं। वी आर प्रिविलेज एंड ऑनर टू वेलकम यू सर, हिज एक्सलेंसी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू सर, प्लीज। And ladies and gentlemen, would like to request you all to rise up for the national anthem. I would like to request you to play the national anthem, please. परंपरा रही है कि जब भी हम शुभ कार्य करते हैं तो हमारे प्रकृति के हम पुजारी हैं, तो इसलिए हम हमारे डोनी जितनी भी प्रकृति है उनके हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, इसलिए हम दिया जलाते हैं। और हमारे साथ साथ में हमारे पुजारी जो है इसका प्यूरिफिकेशन जो कर रहे हैं, जो पुजारी है sarda lamra। Anake Donyi ka bettinge mere do bedke jederko darke jinaka saruke bettingo bedke jederko lagrunge bettingo bedke jederko daabke bettingo bedke jederko daabke bettingo bedke jederko so niya ay kaoga darke tumka ka tumki ke yame ka homme hoga garduke garboso yatwe labiko bedke daabun yalunge labiko bedke daabun tatenge labiko tasake labiko bedke daabun chunge labiko lanege labiko bedke daabun मुझे मुझे को बहुत के दाबो ने हमने दी नोती घूम के जे जाओ अन्न के धोनी ने नौका दिन अन्न के भारत का अन्न के अरुणाचल गंगा का गवर्नर का लाल के तकसो लालों के तकसो जेने को जब के सतुंगम तब के सबकम के सतुंगम जो के सबकम हो के सबकम होना गासा के के सतुंगम और के सबकम सबके सबको के धनसी खुशियां रहे और वो सभी जितने भी हमारे जो इवेंट्स है उससे दूर रहे, इसलिए हमारे पुजारी अभी प्यूरिफिकेशन के बाद में जो रिदिन है, रिदिन हम जो रक्षा धागा बोलता है वो हम बांध रहे हैं। तो ये जितने भी खासकर हमारे जो अबोतानी के जो बिलीवर्स है, दोनी पोलो के बिलीवर्स है, उसमें रिदिन काफ़ी फेमस रहता है, काफ़ी विश्वास रहता है। तो रिदिन हमारे रक्षा जो धागा है, रक्षा सूत्र है, उसको हम पहनते हैं। और हमारे जितने भी अन्य जो यहाँ पे जो जातियाँ हैं जो अरुणाचल में है, वो सभी हम इस पर विश्वास करते हैं। ये बहुत ही सुंदर ये एक प्रथा है हमारे sarda lamra जो इस कमिंग से बिलोंग करते हैं। थैंक यू sarda lamra। बहुत हमारे जो यंग प्रीस्ट है अरुणाचल के काफ़ी प्रसिद्ध है sarda lamra, जो मूलतः इस कमिंग से है और नागरकन इलाकों में वो कार्यरत है। थैंक यू sarda lamra। विद ड्यू परमिशन फ्रॉम हिज एक्सलेंसी हम आगे के कार्य को शुरू करते हैं। आगे के कार्य को और हम बढ़ते हैं। तो ओपनिंग प्रेयर सॉन्ग बाय दोनी पोलो kumko
जो हमारे दोनी पोलो कुमको है, जो पूजा स्थान है जो चिंपू में है, तो वहाँ के जो अनुयायी है, बिलीवर्स है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक प्रेयर सॉन्ग इन्होंने की रचना की है, तो उनसे हम सुनते हैं दोनी पोलो कुमको चिंपू प्लीज। पूजा ला रीति ना कोई बंधन Thank you. को एक सरदा
ये यहाँ पे हमारे 100 से ज़्यादा जनजातियों के दुआएं हैं और प्यार है इसमें और ये हमारे परंपरागत ये हमारे प्लेट है इसमें पूरे हमारे दुआ और प्यार पूरे जनजातियों के एक तरफ से बहुत धन्यवाद। स्लोगन लगाऊंगा थोड़ा साथ दीजिएगा। अतुर्तो अनदोनी बोम्बेरों दोनी पोलो कुंबेरे दोनी पोलो जय अमिक मथाई जय इनी माशिलो जिनु जोवंजंग जय रंग कथक जय रंग प्रा जय लॉर्ड बुद्धा जय दोनी पोलो। Most respect today's chief guest, Honorable Governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General K.T. Patnaik Saab. Most respect President Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh, Katungwari Sir, Padma Shri Waide Tongchi Saab, और हमारे अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस अफेयर्स काउंसिल मेंबर लॉर्ड कोजे सर और कैंडिको मेगा सर और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स के सेक्रेटरी अजी पिगलीगो फॉर्मर प्रेसिडेंट अजी डॉक्टर लेगो अरुणाचल विकास परिषद के प्रेसिडेंट हमारे गोविंद सर डॉक्टर ताता साहब इमिरुनी सर और जितने भी जो यहाँ पे आए हैं हमारे अभी ओपनिंग सॉन्ग के जो लिरिसिस्ट हैं हमारे फ्यूचर लेजेंडरी हो सकते हैं हमारे किरकी ओरी साहब द 24th फाउंडेशन डे ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इसीलिए मैं इसके जो शुरुआत जो करने वाले जो इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी को 1999 फॉर्मेशन से पहले जो शुरू से काम किया है जैसे कालम रूपो जी साहब ने और कुछ लोग हैं उन लोग को याद करते हुए कुछ तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन एक जोरदार तालियां तो मार दीजिए। थैंक यू सो मच। Arunachal is having 26 major tribes and about 100 sub-tribes with different languages, faith and belief and many unique cultures and identities. However, over the years, especially from the early 70s, there had been unabated erosion of rich indigenous faith and belief systems in the state. Hence, the cultural erosion, mainly due to influence of alien religion as well as ultra-modern culture. Of late, it was realized that something preventive measures needed to be taken to put a brake on the unabated erosion of rich indigenous faith, belief system and culture. As such, religious and cultural pioneers of the state like Golgi Botte, Karan Rupoji, Osing Eringi and Tumpak Etesi, after their participation in the Congress of the International Association for Religious Freedom in Hamburg, Germany in 1990, aired the concept of Donyi poloism for the first time in the American history, and also formally registered the Donyi polo as an indigenous religion of Arunachal Pradesh. Still, not much could be done to organize the indigenous faith believers of the state towards the much needed preservation, promotion, practice and participation of all the indigenous faith and belief systems in the state. Towards this end, the Indigenous Faith and Culture Society of Arunachal Pradesh, which is abbreviated as IFCSAP, was duly founded on this auspicious day of 28 December 1999 by the combined and selfless efforts of many like-minded seniors personalities of the state. This is now commemoration of the entire body of
the indigenous faith believers of the state, like Donyi Polo of the Tani group, tribes comprising of Adis, Apakanis, Galos, Nisis, and Tagins, the Ini Masalajino of the Idumishi, the Amit Matai of the Kaman and Tarao Mishmi, the Rangtraism of the Tansas, Neo-Jonism of the Hakas, the Katagran and Noctes of the Joanjang, of the Manchus, and the Buddhists, etc. The IFCSAP is focused not only towards the faith and belief system of the indigenous communities of the state, but also jealously endeavored towards preservation, promotion, implementation of mother tongue among all the indigenous communities of the state, since language is the one and only medium through which rich culture and heritage of the state can be preserved and promoted. Hence, the IFCSAP registered under the Society's Registration Act 1869 with its own constitution bylaw to govern among our members organizations, the objective of the which are as follows. 1. To promote, preserve, protect the age-old tribal faith, custom, tradition, and belief system of all the indigenous faith groups of communities in the state. To promote, preserve, develop, and carry out professional research and documentation of all the indigenous faith groups of the state to facilitate and promote indigenous faith movement in the state. To facilitate the efficient conduct of indigenous community-based festival and to provide appropriate windows to expose the rich cultural heritage of the state to the outside world. To act as an apex regulator All here today, so may I please have your attention for the state briefing. Preciously born to late Fungchu Tongchi and late Richard Chodong Tongchi on 13 June 1952 at the Bakani cantonment of Chigao, West Khabur District, Arunachal Pradesh, Sri Yeshe Dorji Tongchi is the exponent, culturalist, and meliorist of region's intelligentsia and modern thinking bridge spanning the chasm between cultures and languages beyond boundaries. A penmanship with compelling plots and tastes of human emotions, his prolific writings and masterpieces, beginning from a poem named Junbai, made profound impacts on the lives and credentials of people and their socio-cultural and religious understanding. His much-acclaimed 7-novel forged short stories, a folk tale, a history book, a travelogue, an autobiography, and 4 translations, including the autobiography of former governor of Arunachal Pradesh, General Jijin Singh's The Soldiers General, are notably in a feat, and thus bears a stamp of its distinctive genius for creativity. The use of regional colloquial in his masterpieces helped introduce region's critical wisdom and cultural mosaics to the mainland and vice versa. And for these and more, he has niched a place of unconquerable reverent reflections and admirations among the literary canons of the country and iconic personalities of the state. Sri Waidi Tongchi's stairs of literary masterpieces radiate social behavior, cultural harmony, religion, knowledge and language, aspire for intercultural understanding amidst diversity, social engagement, religious empathy and enlightenment, community amity, and intimacy with nature, which is indigenous people's way of life. His ideas scattered in his countless writing and in some pages of popular journals like Prakash, Manoranjan, Prantik, and Satsari, inspired many to create pride in own language, culture, belief system, practices, heritages, and legacies. As the president of IFCSAP from 2011 to 2014, he proved his mettle with awe-inspiring services to his people. He had worked tirelessly towards the spiritual upliftment of the indigenous people and their faith, fidelity, and practices. His tenure had witnessed the firm footing of IFCSAP to an organized apex body of the indigenous faith groups and heightened indigenous movements
against the onslaught of alien fates. The glory and fame of IFCSAP had reached greater heights during his tenure. And in his illustrious stint as a penman, he doomed hats and accolades with more than 20 awards in different fields. Among his 20 and odd awards includes the Padma Shri Government of India 2020, Sahitya Academy Award 2005, Kargu Gamgi Itanagar Award 2021, Dr. Bhupen Hazarika National Award 2017, Bhasha Bharati Award 2005, from Central Institute of Indian Languages, Mysore, D.Litt. Honoris Causa, Dibrugarh University, Assam, among others. While the Assamese novel Mona Otmukar, which means silent lips, murmuring heart, won him Sahitya Academy Award, 3 of his novels were made into feature films, which brought laurel to the state with prestigious National Film Award of President Rajat Kamal and several national and international awards by each of them. The IFCSAP believed that he would go on a prosperous, lead, change lives, inspire countless, and leave indelible legacies of being great. In recognition of his outstanding and selfless service rendered to the people in the field of socio-cultural, religion, education, and idealism, the Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh is pleased to bestow upon him the IFCSAP Ratna Award 2023. On this day of 28 December 2023 at Golden Jubilee Banquet Hall, Itanagar. Once again, from the core of my heart, I, and on behalf of all the indigenous faith believers of the state of Arunachal Pradesh and the nation as a whole, heartily congratulate our Abo, Awardee Donyi sir, for your utmost contribution and unending perseverance. Once again, ladies and gentlemen, thank you so much for your time and patience. Please have a good day. Thank you. ये सर हमारे तरफ से आपको पूरे आपके शहर के लिए आप लंबी उम्र इस तरह से हमें प्रेरणा देते रहे एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि वाई डोंची साहब के समय में ही ये रत्ना अवार्ड का कंसेप्चुअलाइज हुआ था। उन्होंने जब प्रेसिडेंट था 2012-15 टेन्योर में, आज उन्हें ही IFCSAP रत्ना अवार्ड मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है, ये 4th IFCSAP रत्ना अवार्ड है तो को मिल रहा है। इसमें कैश प्राइज 1 लाख रुपीज के साथ में है। कैश अवार्ड भी है रुपीज 1 लाख। हम दुआ करते हैं आपके लंबी उम्र हो गए, जैसे कहा है यंग एंड वी होप यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। Thank you, sir. Thank you very much. And I would like to request Awardee Donyi sir to have a few words, sir, please. His Excellency, the Governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General Retired K.T. Parner, Sir, respected President of Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh, Engineering Kargu Gamgi, Secretary Education and Department of Indigenous Affairs, Mr. P. Degu, all the ex-presidents, if they are present here, advisors of the IFCSAP, members of the General Council of the Department of Indigenous Affairs, Director of Department of Indigenous Affairs, Sri Secretary, who is also Vice President of IFCSAP, Sri Naitaba, Vice President of IFCSAP, the Secretary, General Secretary Sri Tombin Tamin,
Srimati Maya Norton, President Women Wing, all the members of IFCSAP who have assembled here, the district representatives of IFCSAP, ladies and gentlemen present here. As Lead President of IFCSAP, when I first raised the proposal for introducing an award to give recognition of the dedicated works of men and women of the state in preservation and protection of the indigenous faith and belief, and got the IFCSAP Ratna Award instituted during the annual conference of 2012. I never visualized that one day I myself would be conferred with this prestigious award. I had never borne an intention that I should be eagerly selected for this award and mean it to be for those great persons who had dedicated their life for protection of faith, religion and culture of their respective tribes, which was handed down by their forefathers, but now threatened by the much more powerful religion of world. I myself belong to one of the most powerful religions of the world, that is Buddhism. And for protection of Buddhism, I need not do anything. As right from His Holiness the Dalai Lama, there are lakhs and thousands of Buddha bhikkhus, saints, and lamas who are dedicated in preserving and promoting the Buddhism through their daily sermons and prayers. Moreover, I have hardly seen Buddhist people being converted to other religion. Rather, it is opposite case, and there are ample cases when even world famous personalities belonging to other religion voluntarily embracing Buddhism, attracted by the teachings of the Lord Buddha, which are based on scientific truth. But the case of our Donyi Lamraism, Communism, Nishinism, etc., which have no religious term in the eyes of the people of alien religion, needs strong protection and preservation measures. And many of our Arunachalese brothers and sisters are devoted in the cause of it. My motive of instituting this award at that time was to give recognition of the works of such persons, not a man like me who did not have to do anything for protection of their own religion. Yet IFCSAP had considered my name for this award, and refusing to accept the award would be an insult to this august institution. So with great humility, I accept the IFCSAP Ratna Award and offer my felicitations to the Thank you very much. Good morning to everyone here. I am absolutely humbled and greatly pleased to have been invited to this congregation of the Indigenous Faith and Culture Society of Arunachal Pradesh. I have had a long chat with the President, Secretary, and I have been made aware of your activities over the years. So first and foremost, let me congratulate everyone here on your 24th Foundation Day. It's a significant milestone that you're nearing a quarter century of an organized belief and faith in your religion. It's a very new religion which has been created by you as a society, and I'm sure that the integration, protection, preservation and promotion of your faith will go a long way the way you have organized yourselves. And I pray and hope that you will get the fullest support from all those who are part of it, and also from the Raj Bhavan, as has been mentioned.
foremost, I would like to extend a very warm, hearty congratulations to Shri Yeshidorji Tamji for the Ratna Award being conferred on him for his sustained, dedicated and honest service to the religious faith. I think it speaks a lot for the kind of work he has done, the kind of integration he has ensured and taken everybody along to make sure that the indigenous faith and the cultural society remains homogeneous at all times. And you bring many good things into it which will propel the faith for others to follow and maybe join you in times to come. So, first of all, thank you very much, Sri Kargu Gamgi, President of the IFCSAP, General Secretary, Sri Tambo Tamimji. I thank all the distinguished guests and invitees who are here today, and all my beloved indigenous faith followers, friends of media, ladies and gentlemen. So as I said, I wish to compliment the IFCSAP for this noble act of promoting, preserving, protecting and patronizing the indigenous faith and the cultural society of Arunachal Pradesh. This was necessary because of the environment that Arunachal has grown over the last, I would say, half a century or more, maybe a century. The Northeast was in a state of neglect at the time of independence. After independence too, the Northeast faced many problems. Not many people were ready to come here to stay and work. The government officials who were sent also did not last very long. So the whole onus of guiding and taking Northeast to its destiny fell on the elders at that time. And it was unfortunate that because of our neglect, other agencies trooped in here and the conversion here. I had the privilege of serving in Northeast since early 70s, and I have seen through the entire activity which has propelled here. But I am so glad to observe and state before you that out of all the 7 sisters of Northeast, it was only Arunachal Pradesh who did not have any insurgency movement in this Northeast. That indigenous faith, more younger people should come out with literary efforts, write about the faith, write about your beliefs, write about your experiences. This must travel. It must travel through your state, through the Northeast, and to the other parts of the country. It's only when people come to know that they start believing. They say seeing is believing. So I hope and wish that there will be more literary efforts made by younger people who are more educated today than they were before, so that the essence of the faith spreads around. As I was reading about the indigenous faith and the virtues, I was quite impressed with certain activities that I followed over the years. The taboo that you imposed on ritual sacrifices and the focus and resorted to recitation and documentation of spiritual verses at the prayer centers has resulted in reformation of the shamanism, helping in protection and preservation of indigenous faith and culture. Now, this is a big act of faith, and I hope it continues. And my worry is that there may still be some very small tribes which are existing in the state. The worry is that they may also convert if they are not taken in, or if they don't understand what is a better way of living and praying. So I am sure that your society will take care of those also and integrate them so that more of Arunachal becomes one. As the President mentioned,
I had the privilege of visiting the indigenous temples in Tirap and Changlang. I was greatly impressed by the way they conduct the prayers, and what made me more happy was that the self-help groups of the faith showed to me about 20 young boys के इस प्रोग्राम पे आए हमारे ऑनरेबल गवर्नर, प्रेसिडेंट IFCSAP, दिया के सेक्रेटरी और अवार्डी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट तोमसी सर, फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे सचो सर और बहुत लोग आए हैं, काउंसिल मेंबर्स और हमारे दिया के डायरेक्टर और हमारे इंडिजिनियस पेट का जो प्रेसिडेंट लोग आए हैं, कम्युनिटी बेस्ड इंडिजिनियस पेट का डॉक्टर इमिन सर और उसके साथ में आए हुए सभी जनों को और डिस्ट्रिक्ट से आए हुए और हमारे जो प्रेयर सेंटर्स यहाँ ईटानगर में जो बसे हैं वहाँ से सभी लोग आए हैं, सबको। और सर, ऑनरेबल गवर्नर सर, जैसे हमारे पाइदाबे साहब ने बताया कि आपका राजभवन से हमारे IFCSAP का नाता तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। लास्ट टाइम हमारा भी आचार्य साहब जब थे उस समय में हमारा जो नाबम तथा जी को हम लोग वो जो डॉक्टरेट ये करके आए हैं उनको हम लोग ऑनर करना था। आपका दरबार हॉल में हम लोग को परमिशन दिया उन्होंने, फिर दरबार हॉल में हम लोग को हाई लंच दिया। तो ऐसे हमसे आपका नाता जो गवर्नर हाउस से जुड़ा है, इसी तरह आज आप हमारे IFCSAP परिवार के रिक्वेस्ट को सुन के अपना समय नहीं होके भी वो समय निकाल के हमारा रिक्वेस्ट को सुन के आज आप आए हैं यहाँ पे। हमारे IFCSAP परिवार की तरफ से आपको लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आने वाला समय में भी हम उम्मीद करते हैं सर, और उसने आपने जो पिछले बार इंडिजिनियस पेज डे में भी हमने आपको रिक्वेस्ट किया, आप खुद ही बोला हम लोग को बुला के सिर्फ हमारा पास 2 घंटा है, उसमें अगर आपका काम चल जाएगा तो मैं रहूँगा, नहीं तो मेरा ऐसा प्रोग्राम शेड्यूल है। तो आप हम लोग को समझाया सर, आपको हम लोग दिल से जो फादर जो अपना पिताजी जैसा हम लोग को समझाया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हम लोग को बुला के अपना राजभवन में जैसा समझाया, हम लोग अभी तक दिल में है और उम्मीद करता है डोनी पोलो अमित बताए सभी भगवान आपको लंबी आयु रखे और हम लोग का साथ इस तरह हमें मार्ग दिखाए। और आज जो आप आया, हम लोग का परिवार जितना डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और कैपिटल में प्रेयर हॉल से आए हैं, उनका तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ का हमारा सेक्रेटरी सर, आप अपना समय को निकाल के आज हमारे बीच में आए, आपको भी हमारे IFCSAP परिवार की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे स्पेशली हमारे तोमसी सर जो इतना बिजी शेड्यूल होके आज हमारा रिक्वेस्ट को सुन के सर आप आया, और आप तो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुका है, जो आज रत्न अवार्ड है आपके ही दिमाग से इसको शुरू किया गया था। तो इसलिए और हमारा इंडिजिनियस पेज डे जो हम 31 दिसंबर को किया था, लेकिन 31 दिसंबर का करने से क्या है कि उस समय में हमारा वेटिंग नाइट न्यू ईयर तो आदमी का थोड़ा बिजी रहता है, वो जो हमारे तालोम रूपो जी का जन्मदिन 1 दिसंबर को आपने बनाया, और
आप आज आया, हम लोग का सब परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट है, हमारे बच्चों साथ जितना भी आए हैं, आप सबको भी हमारा परिवार की तरफ से, सबका CEC की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा डॉक्टर रूमी जो IFCSAP का प्रेसिडेंट है, कल साथ में था, उन्होंने हमारा इन्वाइटेशन को, रिक्वेस्ट को सुन के रात वहाँ से 12 बजे छोड़ के यहाँ सुबह बोल के यहाँ हमारे साथ आए हैं। इसलिए सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का आप लोग का हमारे साथ में अगर आप लोग के साथ रहेगा तो हमारा ताकत भी बढ़ता है। तो और जितना भी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग, क्योंकि आप लोग को इसलिए आज बुलाया क्योंकि हमारा फाउंडेशन डे भी है और IFCSAP रत्न अवार्ड प्रोग्राम भी है, इसलिए आप लोग को हर डिस्ट्रिक्ट से दूर दूर 3 करके आए हुए हैं। आप सबको भी अच्छा अपना काम को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। और मैं वही आने दोनी से अब से ये प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी अपना गाँव, अपना डिस्ट्रिक्ट में सही सलामत पहुँच जाए। और आप लोग आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी प्रेयर सेंटर है यहाँ पे ईटानगर में, जो ओपनिंग सॉन्ग, क्लोजिंग सॉन्ग जो लोग गाने के लिए आए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग है तो हम लोग है, आप लोग नहीं है तो IFCSAP भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमारा मीडिया पार्टनर जो आज हमारे प्रोग्राम को कवर कर रहा है, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्पेशली ये प्रोटोकॉल ऑफिसर जो आज बैंकट हॉल को हम लोग को परमिशन देके यहाँ प्रोग्राम को करने दिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सभी को, और यहाँ पर जितना कार्यकर्ता है यहाँ के बैंकट सभी को हम लोग बहुत बहुत IFCSAP की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और यही उम्मीद रखते हुए आज हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब जो आके हम लोग को ब्लेसिंग दिया है, और जैसा मेरा प्रेसिडेंट, हम लोग का प्रेसिडेंट ने जैसा आपको बताया कुछ जो काम होके भी फिर अदल बदल कर दिया, तो इसमें हमारा कुछ नहीं है। दिल हमारा अभी तक आता है, जो राजभवन से हमारा जो नाता था, जो राजभवन से जिस नाम से हमारा जन्म दिया, जिसका फिर उसको दिया बना दिया, इसको उम्मीद रखते हुए सर आपका समय थे एक तोहफा के तौर पे ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को बोलो, क्योंकि उन लोग कहते हैं पेंट वर्ड नहीं है, असम में भी तो पेंट वर्ड लगा के डिपार्टमेंट को बनाया। असम और अरुणाचल कौन सा ये तो हिंदुस्तान का अंदर में ही है, तो अरुणाचल में पेंट वर्ड नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको लगाने का आपसे वही पोलो से प्रार्थना करते हैं कि जैसा प्रेसिडेंट ने आपको रिक्वेस्ट किया, इसको थोड़ा सा गौर कीजिए, सरकार से थोड़ा बदलाव करने से, ठीक है। और इतना कहते हुए आज हम लोग खुशी के दिन है, और हमारे स्पेशली कौंसिल सर को भी दोनी पोलो से भी और हमें हमारा IFCSAP और भी लीड करे, और हमें वो उनका तरफ से हमेशा ब्लेसिंग दे, एडवाइस दे। इतना कहते हुए आज का ये धन्यवाद भाषण इतने में हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। Lord,
Umbaye Donyi polong. Umbaye yirne ronan. Umbaye ayagam. Thank you. Kargu Gamgi, हम लोग वहीं बने रहेंगे. Ladies and gentlemen, I would like to request you all to rise for the national anthem. हमें और चर्चा करना है. जितने भी डिस्ट्रिक्ट से जो आया है यहाँ पे हम चर्चा करेंगे. और डोनी पोलो, कुमको, चिम्पू बहुत सुंदर आप लोगों ने हिंदी गाना सुबह में वेलकम सॉन्ग गाया. कार्गू आप लोगों ने इतना